write x1, x2 dot xn, where each xi is a real number for I lies between 1 to n. In particular, your R2 is, you can write simply instead of x1, x2, you can think of xy, simply xy. So we'll focus on this n is equal to 2 or 3. So in n is equal to 2, you can think of this R2 is your points of this plane, so that this is your x1 axis or x-axis, this is your y-axis. And in 3 dimension, you can think of that this is your x coordinate, this is your y coordinate, this is your z coordinate. So this is your R3 and this is your R2. So here you take any point. So it has 2 coordinates. The distance from origin is x, and the distance from this x-axis is y. So the coordinate of this point is xy. Similarly here, if you take बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं. yeah. So if you take a point here, so you have to take perpendicular on this xy plane and then perpendicular on this y-axis, so that this is perpendicular. So this is the point P, and suppose maybe you can also join this point. So this distance is your x, this distance is y, and this distance is z. So the coordinate of this point P is x, y, z. So in a similar way, you can also think of n-dimensional space, in which um, each point is represented by n real numbers. Now, we need some structure on this Rn to study functions defined on Rn. So the most important structure which is actually needed, and in fact you can study continuity or differentiability, is this norm structure. So let us talk about this norm structure. So norm structure. So we'll discuss this norm of a point x. So this x is the element of Rn. So it may have this n coordinate x1, x2, x3, xn. So you can write this x as x1, x2, x3, xn. And in short, you only write xi. So the norm of x will define, and this is also called Euclidean norm, and it's defined as this is square root of this x1 square plus x2 square. Just a minute. नहीं बात ज्वाइन करेंगे लोग. Yeah. Okay. x1 square, x2 square plus dot xn square. So this is the norm of a vector. And you will study about a general norm in second semester, but this is a standard norm, what is called Euclidean norm. This is called Euclidean norm. Is simply x1 square plus x2 square, and three-dimensional space, norm of x is square root x1 square. So norm means the kind of length of the vector. So in three-dimensional space, this norm of x is x1 square, x2 square, x3 square. In fact, there are several norms, but this is very suitable and it's useful for us, and this is called Euclidean norm. And it satisfies certain conditions. In fact, there is a definition of norm on any vector space. So first you think of this Rn as a vector space. This Rn, you can add two vectors, you can multiply with some scalar, and so that this Rn becomes a vector space. So
first you should think of this Rn as a vector space, and on that vector space, this norm structure hold. So norm has certain properties. So the first property is that, so norm has certain properties. So maybe you can write some consequences of this definition. So consequences. The first consequence is that this norm of any vector x is always greater than equal to 0. You will take any vector and its norm is always greater than equal to 0. And equal to 0 if and only if the vector x itself is 0. किसी वेक्टर का नॉर्म अगर 0 है and norm is a function from from this Rn to R. Norm is a function from Rn to R defined by this, and it satisfies the condition. The first condition that this norm of x is a vector, x is in Rn, so it is always greater than equal to 0. And this norm equal to 0 if and only if the vector itself is 0. And the second condition, if you multiply this vector x by any scalar lambda. So say this lambda is a scalar quantity. So this norm of lambda x is equal to this mod of x and norm of x. So this is, you can say, scale property. For example, if x vector is given and this norm of x is the length of the vector x, if you multiply 2 times the vector x, its length will be 2 times the length of the vector x. This is the meaning of geometrical meaning of this quantity. And the third is this triangular inequality. This norm of x plus y is less than equal to norm of x and plus norm of y. So this Euclidean norm satisfy these three conditions, which are actually requirement of a function from Rn to R to be general norm function. So this norm defined by this equation is actually a norm on Rn, and this is called Euclidean norm. This is called Euclidean norm. And whenever you have a norm on a vector space, you can talk about the distance function. You can talk about distance function. So you may define a distance function. You know this, what is distance or metric? So distance is a function from Rn cross Rn to R, satisfying condition. So the first condition is that this distance any 2 points should always be non-negative and equal to 0 if and only if x is equal to y. This is a definition of distance function or metric function. And second condition, that distance between x and y is equal to distance between y and x. And third condition, this triangular inequality, distance between x and y less than equal to distance between the third point z and plus distance between z and y. Now, with the help of this norm, you can define a metric. So define this distance between 2 points x and y are in Rn. Oh, sorry. So this is R. This is not Rn. This image is always R. So we define this d from Rn cross Rn to R with the help of this norm, and the definition is this. It's the definition of the distance function, the norm of this x minus y. So this is the definition of a distance on the vector space Rn, right? And it is very easy. Third point you were The third point is the triangular inequality. So if you take any 3 point in the space, say this is your x, this is y, this is z, the distance between x and y is less than equal to distance between x and z and distance between z and y. तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है. वही यहाँ पे लिखा हुआ है. ये उसका कह सकते हैं कि इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहा जाता है. और ये ज्योमेट्रिकल इसका इंटरप्रिटेशन है कि अगर एक्स वाई जेड किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हों तो इनके दो साइड्स के लेंथ का सम जो होगा वो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा. दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी.
तो इस नॉर्म की मदद से इस Rn पे हम एक डिस्टेंस डिफाइन करते हैं और इस डिस्टेंस के साथ आप ये प्रूव कर सकते हैं कि एक्चुअली जो डिस्टेंस इस तरह से आपने डिफाइन किया है वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू कंप्लीट दैट this distance, this function d actually satisfy all these three conditions, and therefore it become actually a distance on Rn, so that it become a metric space. So now with this d, so this is an exercise show that this d is a metric on this Rn. D is a metric on Rn. Means you have to show that it satisfies all the three conditions to be metric. And therefore, with this metric, this Rn become a metric space, which is called Euclidean space. This is called Euclidean space. With this metric, it become a metric space, and this is called Euclidean space. तो इसमें हम इस Euclidean space में हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात कर सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट के डिस्टेंस की बात कर सकते हैं, एंड दैट डिस्टेंस फार्मूला इज गिवन बाय दिस dxy is equal to norm of x minus y, where norm is given by this much. तो इस तरह से अगर आप देखें कि अगर दो पॉइंट आपके पास हैं, x जिसका कोऑर्डिनेट है xi और y जिसका कोऑर्डिनेट है yi, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन xy इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ x minus y, that is xi minus yi, and this is nothing but square root of sigma and xi minus yi whole square, and I varies from 1 to n. This is the formula for distance in R. So it becomes a metric space. Now, with this metric, you can talk about open ball and hence open set in R. So what is open ball? So what is open ball? What is open ball? Open ball of, say, so you can talk about open ball in Rn. Open ball. So it has some center and some radius. So maybe you call center as A and radius as a small r. So open ball of radius, say small r, and center, say A. Open ball, radius, and center A. So this is denoted by this, if you want, you can denote by ball. So B for ball. So maybe you denote by B. In some book, it is also called sphere, but it's better to call ball. So open ball centered at the point A and radius R. So the definition is that is the collection of all those numbers x of Rn such that A and x is ln R. This is the definition of open ball. Open ball. So open ball, maybe if you are in R2, this is your point A, maybe you call with coordinate A1 and A2. So is the collection of all x's which are at distance R, which are at distance less than theta, less than R. ऐसे सभी पॉइंट का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस R से छोटा हो, उनको हम ओपन बॉल कहेंगे, ओपन बॉल ऑफ रेडियस R. In particular, if you are in simply R for n is equal to 1, and suppose your point A is 0 and your radius R is say 1, then what is your ball with radius 1 and center 0? So this is the collection of all x in R such that the distance from 0 to x is less than 1. So this is nothing but the collection of all x in R such that this mod x minus 0, that is mod x is less than 1. So this is nothing but open interval minus 1. The collection of all x such that its modulus is less than 1. ऐसे real numbers जिनका mod 1 से छोटा हो,
वो क्या होगा, -1 to 1. 1 इसमें से excluded है, 1 is excluded. So this is the case when your dimension is 1. In a similar way, if you talk about dimension 2 space, the collection of all points x of R2, which is at most distance 1, in fact less than distance 1 from 0, and that is open disk. You can also call open disk. So open ball in R2 is actually open disk. Similarly, open ball in R3, you may think of, you can say open solid sphere. Open solid sphere. You have to remove the boundary. Boundary should not be there. So this is about open ball. And now, so I'm preparing all these things because we need actually open set in Rn. So you might have studied all these things in your graduation classes, but if some of you have not studied, it's a kind of revision, and you will study in detail in second semester when you will study topology analysis 2. So this is the kind of review for open ball. Now, what is open set of Rn? So what is open set? ओपन बॉल के बाद जो कि ओपन सेट की जरूरत हमको पड़ेगी, तो आप आरएन में अगर हैं तो ओपन सेट किसको कहेंगे? व्हाट इज ओपन सेट? अच्छा, 3 बजे तुम्हारा वो है ना, तो तुम जस्ट अ मिनट. Okay, so I was talking about the open ball. So open ball centered at some point, say it is 0. This was the collection of points which are at distance r from this center. This is open ball. So centered at any point and certain radius r, you may think of this kind of open disk here in R2 and in general in Rn. This boundary should not be here. Now, we say that a set A is open in Rn. If you think of this set A, you say it is open in Rn if each point is center of some open ball contained in the set. Each point is center of some open ball contained in the set. However close to the boundary you are, it is the center of some open ball contained in the set. If your set satisfies this condition, we say that the set is open. So a set or a subset A of Rn is said to be open if each of its points are center of some open ball contained in the set A. If each of its point, एक सेट को हम कहेंगे कि वो ओपन है अगर उसका हर पॉइंट किसी भी ओपन बॉल, ये कोई जरूरी नहीं कि ओपन बॉल का रेडियस नहीं बताया जा रहा है कि वो रेडियस कितना होगा, लेकिन एक ओपन बॉल होना चाहिए. However small radius you choose, it is up to you, but there should be some open ball, but that open ball should be completely contained in the set A. So now you can think of some examples. So suppose you are talking about dimension 2, R2, and you take any open ball, preferably you can take open ball centered at 0. You can take any open ball. This open ball itself is an open set. So क्या आप सभी लोग इस बात से एग्री हैं कि एक ओपन बॉल जो है वो खुद एक ओपन सेट है? बस केवल इस छोटे, yes, sir. हाँ, कैसे है? अगर मान लीजिए हम
हम ओरिजिन इसका सेंटर ले ले रहे हैं और रेडियस हमने मान लिया 1। तो अगर आपको दिखाना है कि ये ओपन सेट है तो आपको देखना पड़ेगा कि ईच ऑफ इट्स पॉइंट शुड बी सेंटर ऑफ सम ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन द सेट। तो इस बात को कैसे आप दिखाएंगे? कोई कोई एक आदमी आप लोगों में से हमको बताए। मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x। तो कैसे आप दिखाएंगे कि हमको इस x को सेंटर मान करके हम एक ओपन स्फीयर ड्रा कर सकते हैं, ओपन बॉल ड्रा कर सकते हैं जो इस बड़े ये जो 1 रेडियस का ओपन बॉल है उसके अंदर कंटेंट होगा। कितना रेडियस हमको लेना चाहिए? सर उसके नेबरहुड में बना सकते हैं मतलब? नहीं, जो भी बॉल आप बॉल कितना भी छोटा बनाइए लेकिन वो बॉल इस बड़े बॉल के अंदर ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन मेरा ये है, आप कितना छोटा बॉल लीजिए ताकि जो आपको बॉल मिले छोटा वो बॉल इस बड़े बॉल के अंदर कंटेन्ड हो। तो इफ x is your point here, x is a point in the ball say of radius 1 and centered at the point 0। तो हमको चाहिए क्या कि इस x पॉइंट को सेंटर मान करके भी हमको एक बॉल मिलना चाहिए, चाहे वो x कितना भी करीब हो इस बाउंड्री के, कितना भी करीब हो, लेकिन हमको एक बॉल लेकिन ये पूरा का पूरा बॉल जो है वो इस बड़े बॉल के अंदर कंटेन्ड होना चाहिए। सो what are the radius of this open spheres centered at arbitrary point x such that मान लीजिए इसका रेडियस आपने एप्सिलॉन ले लिया है, एप्सिलॉन इज द रेडियस ऑफ दिस ओपन बॉल, so this bx epsilon this should contained in b01। so for my question is what should be this epsilon? एप्सिलॉन कितना ले लिया जाए तो कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप 1 रेडियस ले लीजिए तब तो नहीं कंटेंट होने वाला है, तब तो नहीं कंटेंट होगा। जो 1 रेडियस यहाँ पे लेंगे तो इतना बड़ा सब मिल जाएगा, नहीं कंटेंट होगा। तो हमको छोटा रेडियस लेना पड़ेगा, लेकिन क्या रेडियस होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह से चीजें पूछी जाएं कि हाँ साहब दिखाइए ओपन सेट है, तो आपको एक रेडियस दिखाना पड़ेगा कि ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज सेंटर ऑफ सम ओपन बॉल कंटेन्ड इन द सेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि हम एप्सिलॉन कितना छोटा ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। ये हमारा जो छोटा सा ओपन बॉल है इस बड़े बॉल के अंदर ही होना चाहिए, हालांकि इस बड़े बॉल में भी बाउंड्री नहीं है। सर एप्सिलॉन 1 by डेल्टा, डेल्टा ग्रेटर देन 1, 1 minus एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होना चाहिए मेरा क्वेश्चन? 1 by डेल्टा और डेल्टा ग्रेटर देन 1 ले लीजिए। 1 by डेल्टा, 1 by डेल्टा और डेल्टा ग्रेटर देन 1, डेल्टा ग्रेटर देन 1 मतलब डेल्टा 2 ले सकते हैं, चल जाएगा काम। यस सर। या 3 ले लें, जितना आपका ये कितना आम ले लें। डेल्टा कुछ भी लेंगे तो सर तो उसके अंदर ही रहेगा ना। श्योर हैं आप? मान लीजिए कि आप बाउंड्री के बहुत करीब हैं, ये 1/2 रेडियस, अगर मान लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू आपने 2 ले लिया, डेल्टा इज इक्वल टू आपने 2 ले लिया तो 1/2 रेडियस होगा। और मान लीजिए कि हम यहाँ पे 0.999 पे पहुंच गए, मान लीजिए एक्स एक्सिस पे भी हम, और छोड़ दीजिए यहीं पे हमें, और हाफ रेडियस आपने ले लिया, ये तो बाहर हो जाएगा। तब कितना लिया? 1 minus x 1 minus x x is the point of R2। 1 को x के कैसे घटाएंगे? These are different issues। आप देखिए, इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से रेज कर रहा हूँ। ये सब तमाम सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जब एग्जाम में लिखते हैं तो आप अचानक कुछ भी बोल देते हैं, बिकॉज x इज ए पॉइंट इन R2। तो R2 के पॉइंट को हम R में से नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। x का डिस्टेंस फिक्स कर दे 0 से, x का डिस्टेंस जो 0 से फिक्स कर दे, उसके बाद उसके मुताबिक उसका कुछ नाम अभी हमने बताया है कि ओरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम 0 to x, दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ x। वेरी गुड। तो अब नॉर्म ऑफ x को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, राइट, ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, ठीक है। अब 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और अपने एप्सिलॉन या तो इतना ले लीजिए या इससे छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए,
राइट, 1 माइनस नॉर्म, चूंकि 1 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स, क्योंकि हमेशा आपका जो नॉर्म ऑफ एक्स है दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, नॉर्म ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1, सो 1 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो 1 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स से छोटा कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, तो ये भी पॉजिटिव है, 1 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में कोई पॉजिटिव नंबर आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो 1 माइनस नॉर्म एक्स अपॉन 2 ले सकते हैं, नॉर्म एक्स अपॉन 3 ले सकते हैं, एनी पॉजिटिव नंबर यू कैन टेक इन बिटवीन दीज टू, एंड you take the open ball centered at the point x and radius this epsilon, and that open ball must contained in this larger ball, and therefore each of its point is set। देखिए अब किसी arbitrary x के लिए बात कह सकते हैं, this epsilon of course depends on x, but for any x you can find some epsilon in such a way that this bx epsilon is contained in v01, and therefore this v01 is an open set, not only open ball, is an open set। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल की आप बात कर सकते हैं। आप इनफैक्ट कोई आप इलिप्टिकल रीजन ले लीजिए, अगर ओपन है, अगर अगर इसके बाउंड्रीज में नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे ध्यान दें, अगर आप यही क्लोज्ड बॉल ले लीजिए, इफ यू कंसिडर द कलेक्शन ऑफ से दिस क्लोज्ड बॉल बी से maybe 1 of radius 1 and से सेंटर 0, और क्लोज्ड बॉल के लिए हम ये क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स ऑफ R2 such that the distance from x to 0 is less than equal to 1। यहाँ पे क्लोज्ड हम नोटेशन लिख रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट बना दिया, तो इसमें बाउंड्री पॉइंट्स भी आ गए, तो बाउंड्री पॉइंट्स आ गए, अब ये ओपन नहीं रहेगा, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट को सेंटर मान करके कितना भी छोटा आप साइलन लीजिएगा, ये जरूर इस बाउंड्री को के बाहर चला जाएगा, और बाउंड्री के बाहर के पॉइंट आपके इस क्लोज्ड बॉल में नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन ओपन सेट, दिस इज नॉट एन ओपन सेट, दिस क्लोज्ड बॉल इज नॉट एन ओपन सेट। अब इस तरह से आप बहुत सारे ओपन सेट की बात कर सकते हैं। In particular, if you take any closed curve like ellipse or any closed curve you can take and consider its interior point, केवल अंदर के boundary point को आप remove कर दीजिए, so this is an open set। You can think of this the collection of all points x y such that y is positive, this portion y positive, ऐसे point collection, ये x एक्सिस के नीचे के पॉइंट को आप हटा दीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई ऑफ R2 सच दैट y इज पॉजिटिव, केवल ऊपर के पॉजिटिव पॉइंट्स ले लीजिए, दिस इज आल्सो एन ओपन सेट। इफ यू कंसीडर द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई, x positive y positive, that is in first quadrant, is also an open set। What about a line? If you take any line or any curve, this will not be open, so this is an exercise to show that if you take any one dimensional object in R2, or more generally any n minus 1 dimensional object in n dimensional space, it will not be open, it will not be open। So in particular, if you consider a curve, any curve, either a straight line or parabola, whatever curve you take in R2, it is not going to be an open set। So with these background, I am ready to define continuity of a function in Rn। So is it okay to everybody? Everybody is clear with this open set and non-open set? Yes, sir. Okay. Yeah. Yes, sir. So, yeah. So, so now I am talking about a continuous function. So continuity of a function. So continuity of more generally you may call a map, f from Rn to Rm, or open set of Rn to Rm. Maybe you may restrict to open set of Rm. So continuity of a
map f from open set U to open set U of Rn to Rn. So here is your Rn, here is your Rn, and f is a map from here to here. Here is a point, say, this is your domain U, and is a point, say, A. And suppose this is your FA. So this map F is said to be continuous at the point A. So this F is said to be continuous at, say, x is equal to A, which is the element of U, if almost similar definition as I have studied for one variable calculus. If for every positive epsilon there exists a positive delta such that whenever you take a point x which satisfy this condition, this x minus a less than delta, and x belongs to your domain, implies that this fx minus fa, this should be less than epsilon. Now what is here x minus a less than delta? X minus a less than delta, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका a पॉइंट से डिस्टेंस डेल्टा से छोटा हो, ये हो जाएगा ओपन बॉल. So this will be open ball centered at the point A. So for all x inside this open ball, कोई भी इसके अंदर पॉइंट आप x लें, तो इसका जो इमेज बने वो इस FA को, ये राइट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, FA को सेंटर मान करके, और आप एप्सिलॉन रेडियस का एक, आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि दिस, in other words you can also write this x belongs to U intersection this ball centered at the point A and radius delta, and this should imply that this fx belongs to this ball centered at the point FA and radius epsilon. So if this hold for every x in this ball, then we say that f is continuous at the point A. So whenever x is here, its image should go to an open ball centered for every positive epsilon. So whatever epsilon you choose, कितना भी छोटा यहाँ पे आप बॉल लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग एक बॉल यहाँ मिलना चाहिए जो A पर सेंटर्ड हो, और इस प्रकार की उस बॉल के हर पॉइंट का इमेज इस बॉल के अंदर बने. अगर ऐसा है तो हम कहेंगे f A पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और अगर f पूरे डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि f पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है. So if f is continuous at each point A in U, this f is continuous on U. हम कहेंगे कि f जो है वो इस U पे continuous है. So I hope you have already studied somewhere this, at least functions from R2 to R or R3 to R, which are continuous functions. So I'm not going in detail of those functions. I will consider a few examples when we'll study the differentiability and their relation with the continuity. So let us come to the next point. What is actually required for us is a kind of differentiability here. So what should be the analog of difference for continuity? I think it's almost same as you have studied continuity for function of one variable. Similar kind of definition, only you have extended the idea of norm from R to Rn. बाकी definition almost वैसे ही है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. अगर ये नॉर्म Rn का है तो Rn की कंटिन्यूटी होगा, अगर वो नॉर्म R का है तो R की कंटिन्यूटी. डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है. नाउ what should be the definition of differentiability in Rn? In fact, if you take a function from R2 to R,
what should be the idea of differentiability? Because you remember, whenever you discuss differentiability, you study this kind of limit fx plus h minus fx upon h and limit h tending to 0. Oh, just a minute. Just a minute. I'm sorry for disturbance. Yeah. So yes. So when you discuss differentiability of a function of one variable, you consider this kind of expression where you first sum two members of the domain x and h, x plus h, then take its functional value, then take the difference and divide by this uh, difference between the two numbers in the domain, that is x plus h. Of your, you can say somehow it's related to your domain. So for example, if you consider subset of R2, then there is a question, there is a problem in fact. And can you divide by this increment? Can you divide by this increment? Because division in R2 by element of R2 is it possible? So in fact, it's not. It's not. So then there should be some other uh, idea of differentiability. You have to think of another idea of differentiability in R2. So one idea is, as you know, is called partial derivative. So you differentiate along x-axis, differentiate along y-axis, and more generally, there is an idea of directional derivative. So you can differentiate along one direction, In particular, you consider, you restrict, in fact, restrict yourself to that particular direction, and then you consider the increment in the function and divide by this increment in the domain,
and you call that value as a directional derivative. So first I'm going to define direction. So this is the kind of analog of derivative, although we will study its advantage and its deficiencies. But let us at least we proceed to study this derivative, what is called directional derivative. So directional derivative. Directional derivative. So suppose f be a function from some open set u of Rn to say R. Let us first focus on function from Rn to R, or open set of Rn to R, and let A be some element of U, and V is a unit vector. So let V is a unit vector. Unit vector in Rn. So this is your, let's say U. Here is the point A, and suppose this is your direction B. Right? Now, what is your A plus TV? Basically, you want to parameterize this line starting from the point A in direction of B. So if you want to parameterize this line, what is parameterization? It's A plus TV. A plus TV is the parameterization of this line segment joining A along B. So in particular, at t is equal to 0, you are at A, and at t is equal to 1, you will be at A plus B. Say this vector, A plus B. And you restrict your function along this line and consider this increment and difference of this increment, in fact. So this FA plus TV and minus FA. And instead of dividing by this vector quantity, you divide by this scalar quantity t. So FA plus TV minus FA divided by t, and taking its limit t tending to 0. So this is possible because A plus TV is a vector quantity, A is a vector quantity, but FA plus TV is scalar quantity, FA is scalar quantity. You can take the difference and you can divide by some scalar number. So therefore, there is no problem in the existence here. Now, the only problem you have to deal with that whether this limit exists or not. So when this limit exists, we call the directional derivative of the function f at the point A in direction of B. And we denote it by this D, F, A, and in direction of B. This is called the directional derivative of the function at the point A in direction of B. Is it okay to everybody? If this limit exists, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, तब हम कहेंगे कि हाँ, इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस v डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है. राइट? इन पर्टिकुलर इफ योर v इज इक्वल टू, मान लीजिए ei का मतलब ये हुआ कि ith वेक्टर 1 है और बाकी सभी वेक्टर्स 0 0 0 n components है इसमें, n component, n tuples. Suppose at ith place you are 1. In particular for I is equal to 1, E1 में फर्स्ट प्लेस पे 1 है, बाकी सभी 0 है. E2 में सेकंड प्लेस पे 1 है, बाकी सभी 0 है. ith में ith प्लेस पे 1 है, सब 0 है. और nth में nth प्लेस पे 1 है, बाकी सभी 0 है. So they form actually, you can say, a basis of this vector space Rn. So suppose your unit vector V is the ith component of this ith basis vector, then your directional derivative along this ei of this function f at the point A, you can define like this: fa plus t ei minus fa upon t, and this is also called the partial derivative of function in direction of xi.
in direction of xi. So this is also called the partial derivative of f along xi. So the directional derivative along, so in some sense you can say this directional derivative is a kind of generalization of partial derivative. In partial derivative, you only differentiate along coordinate axes. अगर R2 में है तो x y के अलग पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, R3 में तो x y z के अलग डिफरेंशिएट करते हैं, और यहाँ पे जो है Rn में डायरेक्शनल डेरिवेटिव में जो है हम किसी भी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन आप v ले लीजिए, एनी डायरेक्शन v, एंड इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट यू से दैट इट्स directional derivative along that direction v exist. Is it okay to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is the directional derivative of the function along your various coordinates. Now it has some advantages and some disadvantages. The advantage first we will study. First, I am just telling you the advantage. We'll discuss later on. So the advantage is that if these partial derivatives, all partial derivative exist, जैसे मान लीजिए फंक्शन अगर n वेरिएबल का है तो सबके रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिए. अगर सभी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए और वो कंटीन्यूअस हो गए तो हम उस फंक्शन को कहेंगे फंक्शन इज कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल. और हम अभी एक डिफरेंशिएबिलिटी का आइडिया अभी बताएंगे जो कि इससे स्ट्रॉन्गर वर्जन है डिफरेंशिएबिलिटी का. बट फाइनली इट टर्न्स आउट दैट इफ ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स exist and continuous, your function is said to be differentiable. Your function is differentiable. But the drawback is that if at one point all, not only partial derivative, if all even directional derivative exist, केवल हम coordinate axis की बात नहीं कर रहे हैं, x axis, y axis, z axis. अगर कोई point आप ले लीजिए और उस point के जितने possible direction हैं सभी directional derivative exist कर रहे हैं, लेकिन it's possible that the function is not continuous at that point. So that is the major flaw of this definition of you can say the analog of differentiability. अगर पार्शियल डेरिवेटिव को तो छोड़ दीजिए, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव हर डायरेक्शन में अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, it may not assure you that your function is even continuous. So there is a question, maybe you search on yourself. So give an example of a function for which directional derivative exists in all direction, but function even is not continuous at that particular point. And therefore, this derivative cannot be, you can say, analog of the derivative of a function in higher dimension. क्योंकि आपके पास ये पहले से कुछ फीडबैक है कि डिफरेंशिएबिलिटी शुड इम्प्लाइज कंटिन्यूटी. अगर हम कहें कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट शुड बी कंटिन्यूअस. और यहाँ पे तो आप एक डायरेक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में अगर फंक्शन डायरेक्शनल डेरिवेटिव रखता है तो कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो. तो इस पे एक एग्जांपल पे की चर्चा हम नेक्स्ट टर्म पे करेंगे और फिर हम दूसरा एनालॉग बताएंगे जो एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी का एनालॉग है हायर डायमेंशन में. And then we'll show that differentiability actually imply continuity. So that we'll study on next term. So thank you all for joining us. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.